हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिजिटल गवर्नेंस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जेनरेटिव एआई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। दोस्तों, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं रही, बल्कि डेमोक्रेसी, गवर्नेंस, इकोनॉमी और नेशनल सिक्योरिटी को डायरेक्टली अफेक्ट कर रही है। यूपीएससी मेंस में इस टॉपिक से क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं और प्रीलिम्स में MeitY कॉन्सेप्ट बेस्ड MCQs आते हैं। इसलिए आज हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में शॉर्ट पॉइंट्स और सब पॉइंट्स के साथ पूरा टॉपिक कवर करेंगे। Q1 Need of Comprehensive Generative AI Regulatory Framework in India। सबसे पहले समझना जरूरी है रेगुलेशन की नीड क्यों है। Growing use of generative AI। आज जनरेटिव AI क्या क्या कर रही है? टेक्स्ट जनरेट कर रही है, इमेज बना रही है, वीडियो और ऑडियो क्रिएट कर रही है, और इसका यूज हो रहा है गवर्नेंस में, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, इलेक्शंस में। मतलब AI अब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा बन चुकी है। मेजर रिस्क्स एंड कंसर्न्स। अब जब टेक्नोलॉजी पावरफुल होती है तो उसके रिस्क्स भी उतने ही बड़े होते हैं। A. डेमोक्रेटिक रिस्क्स। डीप फेक वीडियोज, फेक पॉलिटिकल स्पीचेस, इलेक्शन मैनिपुलेशन। सीधी बात, डेमोक्रेसी को हिजैक किया जा सकता है। B. सोशल रिस्क्स। हेट स्पीच जनरेट करना, सोसाइटी में पोलराइजेशन, फेक न्यूज़ फैलाना। C. इकोनॉमिक रिस्क्स। जॉब डिस्प्लेसमेंट, कॉपीराइट और IP राइट्स का वायलेशन, मार्केट मैनिपुलेशन। D. सिक्योरिटी रिस्क्स, साइबर फ्रॉड, आइडेंटिटी थेफ्ट, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, रेगुलेटरी गैप्स इन इंडिया। इंडिया में प्रॉब्लम क्या है? कोई डेडिकेटेड AI लॉ नहीं, एनफोर्समेंट मैकेनिज्म वीक, डिजिटल लॉज फ्रैगमेंटेड। मतलब लॉ है पर AI के लिए स्पेसिफिकली नहीं। Why comprehensive regulation needed? डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, सिटीजन्स के राइट्स बचाने के लिए, एथिकल AI इंश्योर करने के लिए, इनोवेशन को रिस्पॉन्सिबली प्रमोट करने के लिए। कंक्लूजन, इंडिया को अर्जेंटली एक बैलेंस्ड, राइट्स बेस्ड और इनोवेशन फ्रेंडली AI लॉ की जरूरत है। Q2 Regulation of AI and Digital Democracy। दोस्तों, AI रेगुलेशन डेमोक्रेसी को डायरेक्टली स्ट्रेंथन करता है। Threats: deep fake speeches, algorithmic manipulation, disinformation campaigns। Result: voters confuse हो जाते हैं। Role of regulation: A. AI content labeling, जो AI से बना हो, right pointing arrow clearly tag हो। B. Criminalization of deepfakes, strong punishment, deterrence create होता है। C. Platform accountability, social media companies key responsibility, algorithm transparency। D. Electoral AI guidelines, fair election ensure, democratic outcomes, informed citizens, free and fair elections, trust building। Conclusion: AI regulation equals strong digital democracy। Q3 Ethical, legal and governance challenges. Ethical challenges: bias, discrimination, privacy violation. Legal challenges: liability fix nahi, copyright infringement, weak cyber laws. Governance challenges: skilled manpower ki kami, enforcement issues, coordination gap. Way forward: dedicated AI Act, ethical AI principles, capacity building। Q4 India's preparedness, strengths, legal, IT Act 2000, DPDP, Act 2023, institutional, MeitY, certain, India AI mission, weaknesses, no AI Act, skill shortage, infrastructure gap, opportunities, global AI leader bane ka chance, digital public infrastructure। Q5 Risk-based regulation, meaning jitna risk, utna regulation. Risk levels: low right pointing arrow, chatbots; medium right pointing arrow, recruitment, AI; high right pointing arrow, election AI; surveillance. Advantages: innovation friendly, targeted control. Limitation: risk identify karna tough। Q6 Platform accountability, meaning social media companies ki zimmedari. Measures:
AI, content labeling. Algorithm transparency, fast takedown. Heavy penalties, Q7. Multi-layered framework. Legal, AI Act. Institutional, AI Authority. Technical, AI Audit Labs. Ethical. Human-centric, AI. Social digital literacy. Q8. International cooperation, NEED. Cross-border cybercrime. Global ethical issues. Global initiatives. UNESCO AI ethics. OECD AI principles. G20 AI agenda. India's role, Global South leader. Ethical AI promoter. Q9. AI and public service delivery. Positive, faster decisions. Personalized services, negative. Bias. Privacy risk. Q10. Deepfake regulation challenges. Challenges. Detection tough. Viral spread. Jurisdiction problem. Solutions. AI detection tools. Penal laws. Platform accountability. Q11. Examine the role of generative AI in transforming public service delivery and the need for its regulation. Generative AI public service delivery को कैसे transform कर रही है और फिर देखेंगे कि regulation क्यों ज़रूरी है. Part 1. Role of generative AI in public service delivery. A. Service efficiency. Generative AI public services को fast, smart और efficient बना रही है. Automated grievance redressal right-pointing arrow complaints का quick solution. Faster file processing right-pointing arrow delays CAM. 24x7 AI chatbots right-pointing arrow citizen support. मतलब governance में speed और efficiency दोनों increase होती हैं. B. Personalization of services. AI हर citizen की individual need के हिसाब से service provide करती है. Customized welfare delivery. Targeted subsidies. Smart benefit targeting. इससे leakages कम होती हैं और inclusion बढ़ता है. C. Governance innovation. Policy drafting. Predictive analytics. Database decision making. इससे evidence-based governance possible होती है. Part 2. Risks requiring regulation. अब दोस्तों, जहां benefits हैं, वहां serious risks BHI हैं. Algorithmic bias right-pointing arrow discrimination. Exclusion errors right-pointing arrow deserving log बाहर रह जाते हैं. Data privacy breach. Decision opacity. Right-pointing arrow transparency की कमी. Part 3. Need for regulation. इसलिए regulation ज़रूरी है. Ethical deployment के लिए. Accountability fix करने के लिए. Citizen trust build करने के लिए. Conclusion. Generative AI. तभी effective governance tool बन सकती है, जब USKA people-centric, ethical or accountable regulation हो. Q12. Generative AI. Regulation must be grounded in constitutional values. Discuss. UPSC को बहुत पसंद है constitution plus technology का linkage. इस question में हम देखते हैं कि AI regulation को constitutional values पर based होना क्यों ज़रूरी है. Link with constitutional values. A. Article 14. Right to equality. Algorithmic bias को रोकना. Fair decision making ensure करना. AI का output non-discriminatory होना चाहिए. B. Article 19. Freedom of speech. Over-regulation से censorship नहीं होनी चाहिए. Balanced regulation हो. Free speech plus responsible regulation दोनों साथ साथ. C. Article 21. Right to privacy. Data protection. Consent-based data use. AI governance का core pillar privacy है. D. Democratic principles. Free and fair elections. Informed citizens. Governance implication. Rights-based AI framework. Citizen-centric regulation. Trust-based digital governance. Conclusion. Constitutional grounding के बिना AI regulation neither ethical होगा nor democratic. Part B. Prelims MCQs. Teacher explanation style. MCQ 1. Question. Consider the following statements regarding generative AI. 1. It can generate original text, images, audio, and video. 2. It functions only through pre-programmed rules. 3.
It poses challenges related to misinformation and deepfakes. Which statements are correct? Correct answer, B. 1 and 3 only. Explanation. Statement 1, बिल्कुल correct है. Statement 2 गलत है क्योंकि generative AI, machine learning और neural networks पर based होती है, सिर्फ pre-programmed rules पर नहीं. Statement 3, BHI correct है. MCQ 2 deepfake. Correct answer, B. AI, generated manipulated audio/video. Explanation. Deepfake का मतलब होता है AI के थ्रू बनाया गया फेक ऑडियो या वीडियो जो रियल जैसा लगता है. MCQ 3 risk-based regulation. Correct answer, C. Regulation based on level of risk posed. Explanation. High risk AI par strict rules. Low risk par light regulation. MCQ 4. Global Ethical AI Initiative. Correct answer, B. UNESCOAI. Ethics Framework. MCQ 5. Data Protection Law in India. Correct answer, B. Digital Personal Data Protection Act, 2023. MCQ 6. Major Threat to Democracy. Correct answer, B. Deepfake-based election manipulation. MCQ 7. Platform Accountability. Correct answer, B. Platform Responsibility for AI Content Moderation. दोस्तों, अगर आपको ये हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स को फ़ायदा मिल सके. थैंक यू सो मच. जय हिंद.